ये सामने आप देख रहे हैं DLF साइबर सिटी एंड NH8। यहाँ से हमने लिया यू टर्न और हम जा रहे हैं सेक्टर 22। ये पूरा उद्योग बिहार का आप एरिया देख रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉर्पोरेट हब्स हैं, ऑल ऑफिसेज आर हेयर। और यहीं पर पास में है ये हमारा आज का लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो ऑफर कर रहा है आपको रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स विद देयर लग्जूरियस क्लब हाउस। लेट्स look at this today. एम्बियंस क्रियोसॉन्स, ये प्रोजेक्ट है जो आज मैं कवर करने वाली हूँ फ्रॉम द हार्ट ऑफ आर ऑन प्रीमियम गुरुग्राम। लेट्स लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। वेलकम टू एम्बियंस क्रियोसॉन्स फ्रॉम सेक्टर 22 गुड़गांव। ये एक ऐसी लोकेशन है जो कि हार्ट ऑफ गुड़गांव है, बिकॉज यहाँ पर आसपास आपको सब कुछ मिलेगा। सो एम्बियंस ग्रुप इट स्टार्टेड इन 1986। सो 1986 से ही ये रियल स्टेट का पार्ट है और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है एम्बियंस क्रियोसॉन्स विच इज़ अ लग्जरी प्रोजेक्ट फ्रॉम एम्बियंस ग्रुप। तो ये प्रोजेक्ट मैं आज कवर करने वाली हूँ। द मेन हाईलाइट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज इट इज़ वेरी क्लोज टू साइबर सिटी, एयरपोर्ट, ऑल द मेजर schools and hospitals of our Gurgaon and with close connectivity of Delhi. Ambience Creosones, ये सेक्टर 22 अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की, एम्बियंस क्रियोसॉन्स प्रोजेक्ट की। तो ये सेक्टर 22 है, वेरी क्लोज टू साइबर सिटी। तो साइबर सिटी से अगर मैं इस प्रोजेक्ट की एक्चुअल लोकेशन जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, तो यहाँ से DLF साइबर सिटी पहुँचने में आपको जो ड्राइव टाइम लगेगा वो होगा अप्रॉक्स 5 to 6 मिनट्स का। येस, दिस लोकेशन इज़ वेरी क्लोज टू योर ऑफिस और इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर, सो येस योर ऑफिस इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट टू योर रेजिडेंस ओनली। तो DLF साइबर सिटी के अलावा अगर मैं यहाँ से IGI एयरपोर्ट की बात करूँ, देन दैट इज़ गोइंग टू टेक जस्ट 10 मिनट्स ऑफ ड्राइव टाइम। तो ये सेक्टर 22 मेन NH8 से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है और यहाँ से आप आसपास गुड़गांव के, दिल्ली के जितने भी मेजर हॉस्पिटल्स हैं या फिर जितने भी मेजर स्कूल्स हैं, सबको एक्सेस कर सकते हो। और सेक्टर 22 लास्ट सेक्टर्स में आता है गुड़गांव के, विच इज़ एट द स्टार्ट ऑफ दिल्ली। तो ये थी कनेक्टिविटी। और अगर मैं मेन USP की बात करूँ इस प्रोजेक्ट की, देन अगेन दैट इज़ डेवलप्ड एंड प्रीमियम लोकेशन अलोंग विद कनेक्टिविटी टू ऑल मेजर पॉइंट्स ऑफ दिल्ली एंड गुड़गांव। अब लोकेशन को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। नाउ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द प्रीमियम लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एम्बियंस क्रियोसॉन प्रोजेक्ट है एम्बियंस ग्रुप का। एम्बियंस ग्रुप जो कि स्टार्ट हुआ था 1986 में एंड सिंस देन दे आर पार्ट ऑफ रियल स्टेट इंडस्ट्री। और अगर एम्बियंस क्रियोसॉन्स की बात की जाए, देन द हाईलाइट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, yes, definitely its premium location and connectivity. And the second USP of this project is offering of ready to move luxury houses. ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका OC ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी आ चुका है एंड इट इज़ रेडी टू ऑफर द पोजीशन बाय जुलाई और अगस्त स्टार्ट। सो अगर आप भी देख रहे हैं एक ऐसा रेडी टू मूव अपार्टमेंट जो कि लग्जूरियस क्लब एमिनिटीज़ के साथ साथ प्रीमियम कनेक्टिविटी और बिल्कुल साइबर सिटी, एयरपोर्ट एंड दिल्ली के बिल्कुल साथ में हो, देन दिस कैन बी योर परफेक्ट चॉइस। इस प्रोजेक्ट का टोटल लैंड पैच है अप्रॉक्स 15 एकड़ का और इस 15 एकड़ के लैंड पैच पर हैं 20 टावर्स विद अ टावर हाइट ऑफ G+18। दिस इज अ लग्जरी प्रोजेक्ट विद ऑल लग्जूरियस क्लब एमिनिटीज। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, दिस इज देयर क्लब हाउस विच इज गोइंग टू गेट मेंटेन्ड बाय Leela, a 5-star hospitality partner for this project. So yes, Leela is going to take care and maintain their luxurious clubhouse. And if I talk about the structure of the clubhouse, then it starts with the ground floor.
And here on ground floor, you are going to see first coffee shop, gym, patio, and poolside. Along with this, pool area is also on the ground floor, which is all weather temperature controlled pool, which adds the luxury to this luxurious project, Ambient Creosote. Kids pool is also part of it, and cold water jacuzzi is addition here. Their coffee shop and multi-purpose hall has a good sitting capacity where you can organize your family events or gatherings.
Now, second floor of the clubhouse has kids zone and crèche, party hall, all indoor games room like snooker room and cards room. Apart from this, jacuzzi, sauna, spa is also on second floor of the clubhouse. These were the all details of their luxurious clubhouse, which will be ready to use from the month of August or September. Now it's time to look at their beautiful showcase apartment, and we will discuss about the all sizes available here. Let's move there. अब ये जो है ये ड्रॉप ऑफ जोन है एंड दिस इज द एक्चुअल टावर जहाँ पर आप अपनी यूनिट्स बुक करेंगे, अपार्टमेंट बुक करेंगे, और इसके सामने भी इन्होंने वाटर बॉडीज बनाई है. सो यहाँ पर यहाँ से आप एंटर करते हैं एंड दिस इज योर मेन टावर एंड ड्रॉप ऑफ जोन, एंड फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू go inside. Please come. This is the waiting area of your tower, the main tower lobby, and this is going to be the reception area. Look at the tower lobby, and it's time to move to the sample apartment. Now we are in front of the show apartment of Ambience Creosote. तो यहाँ पर जो आप साइज देखने वाले इस शो अपार्टमेंट में, ये है अप्रॉक्स 3976 स्क्वायर फीट एंड ये है 4 BHK स्टोर रूम के साथ, पाउडर रूम के साथ एंड सर्वेंट रूम के साथ. सो दिस इज द ओनली वन साइज इन 4 BHK. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर और भी बिगर साइजेस हैं जो कि पेंट हाउसेस में, सिंप्लेक्स एंड ट्यूप्लेक्स में आते हैं. सो नाउ लेट्स लुक एट दिस 4 BHK शो अपार्टमेंट. अब जो ये अपार्टमेंट आप देखेंगे इट विल लुक लाइक एक्चुअल अपार्टमेंट ओनली. तो सबसे पहले दिस इज गोइंग टू बी द मेन एंट्रेंस. उससे पहले ये राइट में जो आप देख रहे हैं दिस इज द सर्वेंट रूम, और सर्वेंट रूम की एंट्री 2 वेज से है. फर्स्ट आपका यहाँ से एग्जिट आता है सर्वेंट का, और आपके किचन एरिया से इंटरनली ये सर्वेंट की एंट्री कनेक्टेड है. तो ये है सर्वेंट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम, एंड इसके लेफ्ट साइड में दिस इज द मेन एंट्रेंस डोर. इसका अब जैसे ही आप एंटर करते हैं सबसे पहले आपके राइट में जो आता है दैट इज द फर्स्ट रूम. लुक एट द साइज ऑफ दिस रूम. This is the first room of this 4 BHK with attached washroom, and these are the windows to provide natural sunlight in this room. Now this is the foyer area to protect the privacy of all rooms and even your living area. तो फर्स्ट जो आपने देखा लेफ्ट में that was the guest room, and उसके बाद ये आता है स्टोर रूम, एंड हमारे राइट में जो है दैट इज द मॉड्यूलर किचन. सो दिस इज द स्टोर रूम फर्स्ट, आफ्टर दिस फोयर एरिया, एंड फ्रॉम हियर दिस किचन एरिया स्टार्ट्स. लुक एट द विड्थ ऑफ दिस किचन, एंड दीज स्टोरेजेस आर पार्ट ऑफ योर किचन. तो ये एक मॉड्यूलर किचन है विद ऑल वाइट गुड्स, प्रीमियम गुड्स एंड चिमनी, हॉब, सब कुछ आपके मॉड्यूलर किचन का ही पार्ट है. द सेम वर्क इज गोइंग टू कम विद योर अपार्टमेंट, द सेम फ्लोरिंग, एंड दिस किचन विल ओपन अप इन दिस balcony. ये वॉशिंग मशीन भी आपके अपार्टमेंट का पार्ट है. यस, दिस ड्रायर इज नॉट पार्ट ऑफ दिस अपार्टमेंट. और यहाँ से आ जाती है आपके सर्वेंट रूम की एंट्री और कनेक्टिविटी. Again, look at the space in this kitchen. और जैसे ही आप मेन एंट्रेंस पर खड़े होते हैं तो ये एक स्पेस है, रनिंग स्पेस, जो आपको मिलने वाला है. यहाँ लिविंग एरिया है, राइट में डाइनिंग एरिया है, और यहाँ तक आपका फोयर एरिया आ जाता है. Look at this space. This is the living area. It is connected with this spacious balcony.
And from here we are going to access this. और लिविंग एरिया के ऑपोजिट आ जाता है डाइनिंग एरिया. एंड डाइनिंग एरिया, नाउ लेट्स गो टू दी सेकेंड बेडरूम. सेकेंड बेडरूम जाने से पहले यहाँ लेफ्ट में आ जाता है पाउडर रूम. एंड देन हेयर आर 3 bedrooms. Second bedroom, third bedroom and the master bedroom is there. So first we will go to the second bedroom. Look at this beautiful room. Look at this spacious balcony and attached wash. This is the outer view. तो ये जो आप देख रहे हैं, these are going to be beautiful water bodies. तो ये आप देखिए water bodies है. Then all weather temperature controlled pool and kids pool and cold water jacuzzi. After looking at this second bedroom, it's time to move to the third bedroom. This is the third bedroom. Look at the space here and it comes with the same spacious balcony जो कि आपके living area के साथ भी connected है. Look at this space again in same balcony, living room balcony and your third bedroom balcony. They have provided walk-in closets in 2 bedrooms. In third bedroom, you are going to see the walk-in closet, and in last bedroom also there is a huge space for the walk-in closet. So ये जो wardrobes हैं, इसके अंदर जितनी भी wardrobes हैं वो आपके अपार्टमेंट का पार्ट हैं. तो अगर मैं इस पूरे सिंपल अपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर जितना मूवेबल फर्नीचर, पेंटिंग, डेकोरेटिव आइटम है, उनको छोड़कर जो भी आप देख पा रहे हैं सब आपके अपार्टमेंट का पार्ट है. These are the walk-in closets जो आपके अपार्टमेंट के साथ आएंगी and the same washroom you are going to get here. Now this is the master bedroom. Here comes the foyer area and on my left side these are the wardrobes जो आपके अपार्टमेंट का पार्ट है. This is the size of your master bedroom. These are the windows provided here for clear view, natural, fresh air. Look at the size of this master bedroom, and yes, it has a private balcony. Look at the size of this spacious balcony. Again, beautiful water bodies and the complete greenery. The same flooring finish is going to be part of your apartment. So this is a kind of actual apartment. अब इस मास्टर बेडरूम की जो सेकेंड हाईलाइट है, अपार्ट फ्रॉम इट्स स्पेस एंड प्राइवेट बैल्कनी, ये है वॉक इन क्लोजेट एरिया ऑन माई राइट साइड. These wardrobes will be part of your apartment. The same washroom is going to come up with your apartment, all shower partition and everything. So अब अगर मैं यहाँ साइजेस के बारे में बात करूँ, बिकॉज वी हैव सीन दी 4 BHK, तो इसके अलावा यहाँ पर सिंप्लेक्स एंड ड्यूप्लेक्स में पेंट हाउसेस भी अवेलेबल हैं. एंड इफ यू वांट टू गो फॉर द स्मॉल साइज, इवन 2 BHK अपार्टमेंट इज अवेलेबल हियर. And 2 BHK, then 3 BHK, there are n number of sizes. So if I talk about the starting size, then this is approx 1380 square feet for 2 BHK apartment. In 3 BHK, the first size is 1860 square feet. Next,
2781 square feet, and the next is 3090 square feet, and the last one here in 3 BHK size is 3223 square feet. So these were the approx sizes of 2 BHK, 3 BHK, and the last one 4 BHK, which we are already looking at. This is 3976 square feet. यहाँ पर ज्यादातर जो sizes हैं they come up with the servant room also. Ready to move apartments very close to Cyber Hub and Cyber City, heart of Gurgaon, just next to Delhi, and only 10 to 15 minutes away from the ICI airport. This is the premium location from sector 22 Gurgaon, surrounded with all the industries, corporate hubs, and shopping hubs like Ambience Mall, just 5 minutes drive from Ambience Mall. This was all about this beautiful project Ambience क्रियोसॉन्स. अब अगर आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं, इसका सैंपल अपार्टमेंट देखना चाहते हैं, या फिर आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, now if you want to know anything about these ready to move apartments surrounded with all the corporate hubs and offices, then my team is there to assist you with this particular project. These were the all details of these beautiful ready to move houses and luxurious clubhouse, which is going to get maintained by 5-star hospitality partner of Ambience Group, Leela. And let's meet in next video with a new project and a new location. Bye bye.